రాష్ట్రం క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ హబ్గా ఎదుగుతోందని, ఈరోజు రాజధాని చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని పివిఎన్ మాధవ్ అన్నారు. దేశంలోనే తొలి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ హబ్ను అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయడం శుభపరిణామం అని చెప్పారు. వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యంగా కేంద్ర బడ్జెట్ ఉందని, దేశవ్యాప్తంగా సెమీకండక్టర్ హబ్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. And if we are holding this in such a big way, you can understand how much importance the government of India and Prime Minister Shri Narendra Modi ji gives to the state of Andhra Pradesh. And ever since we have now NDA government here, Andhra Pradesh has become a progressive state with a double engine. So the double engine government, and the result you can see, as our president was mentioning, पहला quantum hub यहाँ बन रहा है. तो देखिए, that is the magic of the double engine government. Now, as far as the budget is concerned, देखने में ये बजट है एक साल का, क्योंकि every year we have financial year budget. So technically this is budget for 26-27. But the road map is for next 25 years. So this is a long-term economy strategy for India, this budget, up to 2050. And that will also include 2047, जिसको के मोदी जी ने विकसित भारत का टारगेट रखा है. Main features, this is a budget focusing on structural reforms so as to create a new economic order which lives up to global benches, which has a global role to play. क्योंकि अब India is one of the frontline nations in the world. अब हम किसी से पीछे नहीं है और दुनिया भी हमें देख रही है to give them lead. So this is a budget which is aiming at a robust economy driven by cutting edge technology. That is why this quantum event also happening on the same day. अब इसमें पहले हम आंध्रा की बात करने से पहले जो मोटा मोटा बजट में क्या चीज़ें हैं, जो मैंने कहा फ्यूचरिस्टिक बजट वो कैसे है, सारा उसमें नहीं जाएंगे. अध्यक्ष जी ने आपको सारा स्लाइड्स बता दिया. मोटा मोटा बिंदु विच हैव गोइंग टू हैव ए ग्लोबल बेयरिंग. फॉर एग्जांपल बायो फार्मा शक्ति 10,000 करोड़. अब उसका क्या इंपॉर्टेंस है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट का ये कहना है द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज गोइंग टू बी बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन. जैसे पिछला industrial revolution was IT driven. Now there will be a shift of economy to recycling processes, regenerative processes, circulation economy, genes, waste to wealth, और होना शुरू हो गया. So वो जब होगा तो we will not be behind others. We will already be ahead of others. And that will also have bearing on our industry. We are already number 3 in biomanufacturing. हमारे जो medical devices हैं, drugs हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सपोर्ट क्वालिटी, वी आर ऑलरेडी नंबर 3 इन इंडो पैसिफिक एंड नंबर 12 और 13 इन दी वर्ल्ड. तो एक हमारा इकोनॉमी और इंडस्ट्री फार्मा का वो मजबूत होगा. दूसरा, ऑल्सो फ्रॉम द हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू, एज वी नो द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक अलग पॉलिसी है हेल्थ मिनिस्ट्री की. वी आर ऑलरेडी नंबर 2 इन डायबिटीज इन द वर्ल्ड. कैंसर हमारा दिन ब दिन बढ़ रहा है. इवन दिस लास्ट ईयर the statistics was that 12 lakh new cancer patients in the country, and they say by 2030 it may go up to 30 lakhs, 20 lakhs if we don't check it. तो उसके लिए again bio manufacturing, cheap, affordable, accessible medicine. क्योंकि ये मैं वो कह रहा हूँ जो आपको सवाल लोग पूछेंगे. लोग कहते हैं जी मिडिल क्लास के लिए क्या है, ये तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चर